सर मेरा आपसे क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन ये है कि जो हमारे फाइनल टर्म होगा सर, तो उसमें जो क्वेश्चन की लेंथ है, एक तो ये है कि रिटन फॉर्म में पेपर हो फिजिकली वहां पे जाके, एक ऑनलाइन है। तो सर जरा काइंडली लेंथ का जरा क्लियर कर दीजिए कि लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि हम उस लिहाज से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकें। और सर सेकेंडली ये कि जो क्वेश्चन आप हमें रेफर करेंगे, ये क्वेश्चन आपने करने सर, उनको कोई ऐसा मेथड हो जाए कि हम उनको आपको सर चेक करवा दें ताकि हमें उस पर कोई अगर शॉर्ट कमिंग है तो वो उसको हम इनके सॉर्ट आउट कर लें। इसमें जो पॉइंट है, पहला तो ये कि मेरा ख्याल है कि आपने जो मिड टर्म में अपने आपकी, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ कि आपके जो जवाब की लेंथ थी वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, उसको बढ़ाने की कोई जरूरत राइट नहीं। सर। हाँ, इतनी ही लेंथ जो है वो सफिशिएंट है। जो ज्यादा भी लिख राइट रहे सर। हैं उनको भी हम कुछ नहीं मना कर रहे कि आप क्यों ज्यादा लिख रहे हैं। असल चीज बार बार मैं कहता हूँ कि जवाब को एनालिटिकल बनाएं और जवाब को आप अलूसिव बनाएं। ये दो राइट। ऐसी फीचर्स हैं, उससे आपके जो आंसर्स हैं उनकी वैल्यू बने। उसमें राइट सर। जनरल जो बातें हैं वो तो मैं कर सकता हूँ। अभी मैंने जो पेपर मार्क किए हैं उसमें एक क्वेश्चन था, ट्रिकी यूज ऑफ लैंग्वेज बाय द विचिस्ट। डेफिनेटली रैंडमली स्टूडेंट को आया है, सारी क्लास का तो ये इशू नहीं था, लेकिन जिन्होंने भी इसको एड्रेस किया है, मेजोरिटी, शायद एक स्टूडेंट के भी ऐसा नहीं है कि जिसने दोनों प्रोफेसिस की लैंग्वेज डिस्कस की। अब ये इतना मेन पॉइंट है, इसको ही कोई स्टूडेंट मिस कर रहा है तो मैं उसका क्या कर सकता। फिर ये कि जब लैंग्वेज को पॉइंट आउट ही नहीं किया तो उसकी इंप्लीकेशन भी नहीं बताई। स्पेशली जो सेकंड प्रोफेसी है वो किसी भी स्टूडेंट ने उसको डिस्कस नहीं। तो जब आप आंसर सोचते हैं, ये तो सोचें कि इसका आंसर है क्या। बाकी हर स्टूडेंट की जो लेवल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो डिफर करता है, और इसी वजह से उनके मार्क्स का भी डिफरेंस आता है। एक कोर पॉइंट है, कोर पॉइंट को अटेम्प्ट करने के बाद दो स्टूडेंट है, तीन स्टूडेंट है, तीनों ने कोर पॉइंट अटेम्प्ट। अब जो है, एक स्टूडेंट को 3 मार्क्स मिले हैं, दो स्टूडेंट को 4 मिल गए। तो दो को जो 4 मिले हैं वो उनकी जो पर्सनल रीडिंग है उसकी वजह से मिले। बाकी जो आपने आंसर की बात की है, अब ये 60 स्टूडेंट का इंडिविजुअली आंसर जो है उनको चेक करना काफी मुश्किल है, इसलिए मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि एज मैक्सिमम जहां तक मुझसे पॉसिबल हुआ आप लोग मुझे भेजें, मैं राइट सर। जितना पॉसिबल होगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है सर। सर मेरा एक एमसीक्यूज जो है ना वो उसका ऑप्शन नहीं था, तो सर मेरे 19 मार्क्स है, तो सर उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना चाहिए, आपने पहले डिपार्टमेंट से। अपना केस रिपोर्ट किया था एग्जाम वाले दिन? जी सर, मैंने उस दिन जो है ना वो मेल किया था, तो एचओडी को फिर मैंने व्हाट्सएप भी किया है। हाँ, अगर आपने रिपोर्ट किया हुआ है तो वो वहां पर ऑलरेडी जो है वो नोटेड है। थैंक यू सर। ठीक है, मेरी थैंक यू अपनी सर। ईमेल भी आप लोगों के सपोर्ट के लिए, ईमेल फिर उसके रिमाइंडर भी मौजूद है। तो राइट सर। आप राइट उसको सर। जैसे ही कमेटी डिसाइड करेगी उसके लिए बात। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी, तो मैं जी बोले, अबैदुर रहमान।
और इस वक्त सिस्टम जो है वो अचानक हार्ड कर हो गया, तो इस वजह से मुझे अब किसी वैसे स्टूडेंट का रेज हैंड शो नहीं हो रहा। प्ले के हवाले से कुछ बातें करता हूँ, उसके बाद जो है उसको शुरू करते हैं। क्योंकि इस वक्त जरा सिस्टम हॉल्ट है, तो मैं स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ। जैसे ही ये कर्सर जो है वो करना शुरू करता है, तब तक वर्बली ही जूलियस सीजर by William Shakespeare is a political play, a chronicle or history play that has focus on political intrigues, conspiracies, perception of the people about their rulers, and conflict of personal image and public image, or private and public self, ideals of honor, ideals of people loving, or you can say the king that is loved by the people. Play Julius Caesar is different from other plays in many respects. First, the protagonist of the play, Julius Caesar, uh, as he appears in title of the play, has, you can say, the least role in play. He is not the character whose action, who the play revolves around his action. As we see in tragedies and comedies and history plays like Richard III, here we see that another character, Brutus, is more, you can say, powerful, and the play revolves, you can say, around four characters: Brutus, Cassius, Mark Antony, and Julius Caesar. So, Julius Caesar is a character, Julius Caesar is a concept about which this play is, but that character, because he was murdered in mid of the play, that character does not live long in play as compared to other significant characters which I have mentioned. Source of this play is, it is thought that there was a historian, Plutarch, and Plutarch book parallel lives of the noble Grecians and Romans. Parallel lives of the noble Grecians and Roman. That was a book that was popular in the reign of Henry VIII and later on Queen Elizabeth. And Shakespeare also read this book and based his character Julius Caesar and other, you can say, character from that book, Parallel Lives
of the noble Grecians and Romans. And in many ways, the image of Julius Caesar has resemblance with the history-making king of England, Henry VIII, and also Queen Elizabeth. Particularly, the issue of successor or succession to throne that is shared by Julius Caesar, who was issueless, and Henry VIII, who didn't have a male child for long time, and he had to commit many transgressions for the sake of his successor to throne. And Queen Elizabeth, she didn't have a successor at all, and with her death, uh, kingship transferred to Scottish royal family, and King James I came into power. So, the way succession was an issue to Julius Caesar, it was an issue to much popular in public Henry VIII and Queen Elizabeth I. Julius Caesar had an adopted son in the play Octavius Caesar, who will emerge as a ruler, a king towards the second half of the play or towards the end of it. Another point about Julius Caesar is Julius Caesar uh, relates omens, superstitions, and irrational beliefs with the power and kingship. On one side, it draws a contrast of reason and irrationality or superstitious beliefs and rational ideas. On the other side, it shows how people in power they become suspicious. It may be out of the public pressure, it may be out of fear that they may lose their position as a king or any, you can say, significant position in a royal kingdom. It also has a notion that a man who is uh, who in his personal or private life is weak, he can be a hero in public domain. And last point is the uh, patriotic figures can misinterpret the moves of their kings or other fellow generals or you can say commanders, and in this way they can create trouble even for those whom they whom they love, whom they respect, but they think that it's against the dignity of their nation. So uh, time is over for first session, so I'm skipping right now.